मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फेक न्यूज़। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन्होंने एक न्यू ड्राफ्ट जो है अमेंडमेंट पेश की है, जो कि आपके आईटी रूल्स 2021 में ही एक अमेंडमेंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर पीआईबी किसी भी पीस ऑफ न्यूज़ को फेक डिक्लेयर कर देता है, तो जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं जैसे सोशल मीडिया जो है आपका प्लेटफॉर्म्स, वो उस न्यूज़ को जो है वो कैरी नहीं कर सकते। उनकी ज़िम्मेवारी होगी अगर वो उस न्यूज़ को जो है वो फैलने दे रहे हैं तो। ठीक है। तो फेक न्यूज़ क्या होता है? न्यूज़ स्टोरीज जो गलत हैं, फैब्रिकेटेड हैं, कोई वेरीफेबल फैक्ट्स नहीं है, उनको हम फेक न्यूज़ कहते हैं। अब इंडिया में कौन से लॉज जो हैं वो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं? आईटी एक्ट 2008 बनाया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी प्रोविजंस हैं कि कोई अगर फॉल्स वार्निंग दे रहा है, लोगों में झूठ फैला रहा है किसी डिज़ास्टर से रिलेटेड, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे ही आईपीसी में भी जो है कोई फॉल्स अलार्म पब्लिक में क्रिएट करने पर जो है सज़ा हो सकती है। ये न्यू प्रपोजल्स कह रहे हैं कि अगर फेक न्यूज़ ऑनलाइन इंटरमीडिएट शेयर कर रहे हैं, तो जो है उनके ऊपर जो है वो फ़ाइन लगाया जा सकता है या फिर उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। तो अब इस पे कंसर्न्स क्या हैं? कंसर्न्स ये हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गवर्नमेंट, मतलब पीआईबी के थ्रू गवर्नमेंट जो भी कह रही है कि ये फेक न्यूज़ है, तो जो गवर्नमेंट को कोई भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप, तो उसको जो है वो फेक न्यूज़ डिक्लेयर किया जाएगा और उसको फैलने नहीं दिया जाएगा, है ना? सो ऐसे ही ये भी देखा गया है कि पीआईबी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं देती। जब वो पीआईबी जब किसी को फेक न्यूज़ कहती है, तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि ये जो है फेक न्यूज़ क्यों है। ऐसे ही कई बार ये भी देखा गया है कि पीआईबी जो है वो कई बारों के जो है खुद भी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे देती है, तो उस केस में क्या होगा? सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल कोल इंडेक्स इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोल मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलैक्सेशन ऑफर की है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के लिए, जो क्योंकि अब जो है कमर्शियल कोल ब्लॉक ऑक्शन होने वाली है। ठीक है। तो अब ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होता है कि आपको जो है कोल के क्या प्राइजेज़ होंगे, उसको जो है टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया जाता है नेशनल कोल इंडेक्स से। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, समझ लो। पिछले साल आज ही के जो है जनवरी के मंथ में ही जो है वो 100 रुपीज़ पर जो है टन के हिसाब से अगर कोल प्राइजेस थे, तो इस साल जो है वो जैसे अगर वो 120 हो गए हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो बेस ईयर के हिसाब से 2017-18 के हिसाब से ये देखेंगे कितना इंक्रीज़ हुआ है। बेस ईयर के हिसाब से ही हम इंक्रीज़ देखने को देखेंगे और उसके बेसिस पर ही जो है कोल माइनिंग में जो ऑक्शन का रेट डिसाइड किया जाएगा। तो इस बार जो है वो एग्जम्पशन दे दी गई है, एक रिवाइज़ नहीं किया है। पिछले साल के ही जो है कोल प्राइसेस की जो है बेस ईयर के साथ जो है कोल प्राइसेस जो निकाले गए हैं उसके बेसिस पर ही जो है ऑक्शन करने को जो है वो प्रपोजल रखा गया है। अब ये नेशनल कोल इंडेक्स बनाया किसने है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता ने इस इंडेक्स को बनाया है। और 2014 से आपको पता है कोल ऑक्शन हो रही है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के लिए के साथ, जो है कोल माइन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ऑक्शन के थ्रू दी जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं AK-203। ये आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो AK-203 कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स बनाना शुरू कर चुका है। 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें 6.1 लाख ये राइफल्स बननी है इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट के साथ रशिया से। तो ये एक कंपनी एस्टैब्लिश की गई इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड 2019 में, और ये जो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है अमेठी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये बनाई जा रही है। ठीक है। इनकी जो है इफेक्टिव रेंज हम कह सकते हैं 300 मीटर के आसपास है, और ये इंडो रशियन डिफेंस कॉरपोरेशन का एक सीधा उदाहरण है। तो अब आपको पता होगा लगभग 70% ऑफ इंडिया की मिलिट्री आर्सेनल जो है वो रशिया से ही आती है। हम दोनों के बीच का जो है डिफेंस ट्रेड है वो $15 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 2018 में। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्रामीण उद्यमी स्कीम सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 200 ट्राइबल वीमेन को फेलिसिटेट करने वाले हैं, जिन्होंने फेज़ 3 ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है ग्रामीण उद्यमी स्कीम के अंदर। ग्रामीण उद्यमी स्कीम क्या है? मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जिसको एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो फंड कर रहा है। ट्राइबल स्टूडेंट्स को जो है फंक्शनल स्किल्स जो है इम्पार्ट करने का प्रोग्राम है। 6 स्टेट्स में जो है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात। पहले फेज़ में जो है कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया जाता है रूरल और ट्राइबल एरियाज से, उन्हें लाकर ट्रेनिंग दी जाती है। सेकेंड फेज़ में रांची में जो है युवा फेस सोसाइटी जो युवा विकास सोसाइटी को में जो है
सेवा भारती केंद्र के थ्रू जो है ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। अब ये थर्ड फेज़ में जो है संसदीय परिसंकुल योजना के अंडर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जो है लैब्स और क्लासरूम्स बनाई हैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एनएसडीसी के द्वारा, और उसमें वहाँ पर जो है ट्राइबल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एनएसडीसी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको स्टार्टअप किया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर काम करती है, और इसमें जो है गवर्नमेंट इसको 49% ओन करती है, और रिमेनिंग जो प्राइवेट सेक्टर है वो 51% इसको ओन करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रेडियो सिग्नल जो है ओरिजिनेट हुआ है एटॉमिक हाइड्रोजन से, जो कि आपके डिस्टेंट गैलेक्सी से जो है वो ओरिजिनेट होकर आया है, और इसको हमारे जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ने जो है ऑब्जर्व किया है, डिटेक्ट किया है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो है मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो है वो इस टेलीस्कोप से डेटा को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, और एटॉमिक हाइड्रोजन का जो है उन्होंने जो है जो है ये रेडियो वेव जो है उसको ऑब्जर्व किया है। तो ये जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है कहाँ पर? लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो है आपका मुंबई बेस्ड जो सेंटर है वहाँ पर ये लगाया गया है। और एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? बेसिक फ्यूल होता है जिससे कि आपकी स्टार फॉर्मेशन होती है किसी भी गैलेक्सी में। ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो है लगभग 21 सेंटीमीटर्स वेवलेंथ की जो है रेडियो वेव्स को एमिट करती है, उसी के बेसिस पर जो है हम इसको पहचान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नटू कोई नागा रथास, ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी पोंगल सेलिब्रेशन में जो नगारथास जो है उन्होंने अक्रॉस द ग्लोब बहुत पार्टिसिपेट किया है। तो ये नट्टू कोई नगारथास कौन है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अपनी फाइनेंशियल डीलिंग के लिए बहुत फेमस हैं, हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, और शिवा और मुरुगन को फॉलो करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी है बहुत बड़ी, और ये चेट्टीनाड तमिलनाडु में है, वहाँ पर जो है ये आपको यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। इन्होंने ही मॉडर्न बैंकिंग इनको हम पायोनियर्स कहते हैं, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है मॉडर्न बैंकिंग के लिए। ठीक है, चेट्टीनाड रीजन आपका तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ की क्यूजीन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आर्किटेक्चर के बहुत फेमस है। 13th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था। यहाँ पर बहुत ही वेल प्लान टाउन्स भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मेडॉग डैम, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चाइना 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है मेडॉग में, तिब्बत में, जिससे कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र रिवर को अपने हिसाब से जो है वो उसके तरह से फ्लो को चेंज कर पाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो एक प्रपोज चाइनीज़ प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का, और मिडॉग काउंटी जो तिब्बत में पड़ती है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के साथ, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। ये लास्ट काउंटी है तिब्बत की, और ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर पड़ती है, जहाँ से यारलुंग जोंगपो, जिसको आप ब्रह्मपुत्रा कहते हो इंडिया में, वहाँ पर इसको यारलुंग जोंगपो कहा जाता है, वो मुड़कर जो है इंडिया में एंटर करती है। चाइना ने ऑलरेडी 3 गॉर्ज डैम भी बनाया हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम, जो कि यांगसे रिवर पर ही बनाया गया है, और ये 3 गॉर्ज डैम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर स्टेशन होल्ड करता है, और इसमें 22,500 मेगावाट बिजली यहाँ से बनाई जाती है। तो अब इसको आप इमेजिन करो, ये मिडॉग प्रोजेक्ट जो 60,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट है, तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गंडक रिवर, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्टोन्स जिनको आप शिला कह सकते हो, वो लाई जा रही हैं नेपाल के काली गंडकी रिवर से अयोध्या में, जिसको यूज़ करके जो है लॉर्ड राम के जो है वो आइडल बनाया जाएगा अयोध्या के टेम्पल में। तो ये गंडक रिवर जो है काली गंडकी या फिर इसको नारायणी कहा जाता है, और ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और ये पटना में जाकर जो है गंगा से ऑपोजिट उसको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रूल 14 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2022, ये आपके जो है गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2022 को लेकर, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने उसके 14th रूल को जो है वो अपोज किया है। 14th रूल क्या कहता है कि जो डिस्कॉम्स हैं वो कंज्यूमर से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो है वो पैसा रिकवर कर सकती हैं, अगर उनको उनको फ्यूल प्राइस से रिलेटेड या पावर परचेज एग्रीमेंट में कोई वेरिएशन की वजह से लॉसेस हो रहे हैं, तो जो डिस्कॉम्स हैं उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है रेगुलेटरी कमीशन से पूछने की, वो जो भी पैसा जो है वो प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर महीने जो है वो बिल में ही एडजस्ट करके अपने जो है लॉसेस को रिकवर कर सकती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is fake news. This topic is important for the governance section. So Union Ministry of Electronics and IT has introduced a new draft of amendments to the IT rules of 2021, which is saying that any piece of news which has been identified as fake by the PIB will not be allowed to be carried by online intermediaries. So what is the meaning of fake news? So it is any news story which is false, fabricated, or which is having no verifiable facts. So in India, we already have laws to control fake news, like we have IT Act, we also have Disaster Management Act, in which if any person is circulating any false alarm related to a disaster or its severity, then of course that if it leads to panic, then of course that person can be punished under the Disaster Management Act. Similarly, any fake news which is creating any false alarm in public can be punished under the IPC of 8060. So what are these new proposals? So these new proposals say that apart from PBIB, any other authorized government agency, if finds that a particular news is fake, then the social media intermediaries or these intermediaries like internet service providers, they will not be allowed to carry that piece of information or piece of news. And if they do so, they will be it would be punishable. They can be penalized for it. Okay, so what are the concerns? So there are certain concerns. It means that anything that government says is not true will have to be taken down from the social media discussions. And it has the PIB has rarely explained why they are considering a piece of news as fake. Similarly, it has been found that PIB itself has sometimes spread inaccurate information. So, who would be responsible for that? Okay, so the next topic is National Coal Index. This topic is important for your economy section. So, Coal Ministry has recently relaxed revision of performance bank guarantee, which is required for commercial coal block auction, which is set for the 30th January. So during the launch of this sixth round of commercial coal mines auction for 141 coal mines, Coal Ministry has decided that the annual revision to the performance bank guarantee based upon the National Coal Index will not be revised. And what is this National Coal Index? So basically, this index is used to reflect the change in the price level of coal based upon a base year, of course, which is 2017-18. And based upon that, these companies or these companies who are bidding for the coal have to submit certain bank guarantees that they have certain amount of money in their bank account, so that that's why they are bidding for the auction. So this National Coal Index has been designed and developed by an Indian Statistical Institute of Kolkata, and this coal auction is happening since 2014, which has allowed private sector participation in the coal industry. So the next topic is AK-203. This topic is important for your security section. So recently, Indo-Russian Rifles Private Limited has started producing these rifles, Kalashnikov rifles, at Korwa in Uttar Pradesh. So it's a 5,000 crore contract in which 6.1 lakh assault rifles will be manufactured in India with technology transfer from Russia. And this company was set up in 2019, and these rifles are being produced at Korwa Ordnance Factory of Amethi district. So these rifles have an effective range of about 300 meters. And if we look at the India-Russia Defense Cooperation, then of course nearly 70% of India's military arsenal is of Russian origin. The defense trade between the two countries has already crossed $15 billion since 2018. So the next topic is Grameen Udyami Scheme. So this topic is important for your social issues. So Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship has will be attending the felicitation ceremony of over 200 tribal women who have completed training under phase 3 of this particular scheme in Jharkhand. And this scheme is basically aimed to it's basically a multi-skilling project which is being funded by National Skill Development Corporation to train tribal students and impart them with functional skills so that they can have certain livelihoods. This scheme is or this project is being implemented in 6 states: Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, and Gujarat. And
In the first phase, candidates were mobilized from rural and tribal areas for training. In the second phase, Ranchi was identified, and this pilot project was being implemented by Yuva Vikas Society through Seva Bharati Kendras in Ranchi. And now, under the third phase, the labs and classrooms were set up, and through them, the skill development training was given by Seva Bharati Kendras. So, what is National Skill Development Corporation? It's a not-for-profit public limited company which was set up by Ministry of Finance in 2008 as a public-private partnership model. And the government owns about 49% of it, and the private sector is owning about 51% of it. So the next topic is giant meter wave radio telescope. This topic is important for your science and tech section. Recently, a radio signal which has originated from an extremely distant galaxy of atomic hydrogen was detected by giant meter wave radio telescope. So the astronomers from McGill University of Canada and Indian Institute of Science were observing this data from telescope to detect this atomic hydrogen. So it's this telescope is a low frequency radio telescope which is operated by the NCRA in Mumbai. And what is atomic hydrogen? So it's a basic fuel which is required for formation of a star in a galaxy. Because these atomic hydrogen emit radio waves of 21 centimeter wavelength, which it helps in direct tracing of this atomic gas in nearby and distant galaxies. So the next topic is Natu Koi Nagar Thars. This topic is important for your art and culture section. So recently Pongal was celebrated and it attracted hundreds of Nagarthas from across the globe. So these Natukai Chetiyars or Nagarthas, they are people of Indian origin and they are well known for their financial dealings and hospitality. They are followers of Hindu religion. They are now they moved out of Chettinad, and they have moved out of India to foreign lands like Burma, Ceylon, Java, Sumatra, etc. They hail from this place called Chettinad of Tamil Nadu, and they are considered as pioneers of modern banking. They have introduced several concepts in the modern banking. That's why they are considered as pioneers in this field. So, what is the Chettinad region? Though, so this region is basically this region is centrally located in southern Tamil Nadu, and it is famous for its unique cuisine, agriculture, and architecture. The origin of this region begins in 13th century, and it has well-planned towns even till now. So the next topic is Midog Dam, which is important for your international relations. So concerns have been made by Indian government regarding China's proposed 60,000 megawatt hydropower project in Midog County of Tibet. So it's a proposed Chinese project which is considered as the world's biggest hydroelectric dam, and it will be built on Yarlung Sangbo, which is of course the Chinese name or of Brahmaputra, and it will be built in Medog County, which is the last county of Tibet, which is located close to the Arunachal Pradesh border. And near to this, this Yarlung Sangpo or Brahmaputra, and through this region enters into India. And to make comparison with the current largest dam, it is the Three Gorges Dam. It is the hydroelectric gravity dam on Yangtze River, and its installed capacity is about 22,500 megawatt. So this Medog count project is about 60,000 megawatts, which is about almost three times the project of Three Gorges Dam. So the next topic is Gandak River. This topic is important for your geography section. So two Shilas or stones will be traveling from Nepal's Kali Gandaki River, and they will arrive to at Ayodhya, because those Shilas will be used to carve the idol of Lord Ram in Ayodhya temple. And what is Gandaki River? It is also known as Kali Gandaki or Narayani, and it's a north bank tributary of Ganga River in India. And it rises at 7,620 meters in Tibet near the Nepal border, and it enters the Ganga River opposite Patna in India. So the next topic is Rule 14 of Electricity Amendment Rules of 2022. This topic is important for the governance section. So central government has recently issued the Gazette notification for Electricity Amendment Rules of 2022, and the Kerala government has objected to the Rule 14 under the same rules. So what does this Rule 14 say?
So it says that discoms will have the power to automatically recover from consumers on a monthly basis any expenses which arise out of variations in fuel price or the power purchase costs. So they do not have to wait for state electricity regulatory commission to specify any price adjustment formula. They can directly recover from the consumers any adjustment surcharges on a monthly basis. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.